Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Kem Chuka Sakai. Welcome back to my YouTube channel, The Insight Generator, to power up your data insights. So guys, I am right back with another videos, and in this video, I'm going to discuss one of the most important and the relevant features that's called date and time, right? So date and time kitna important hai aur kyun hai, I will explain you for sure, definitely. So let's just get us started without making any further delays. But before that, guys, I will request you, please like, share, subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that if I update any videos, you guys are not going to miss any updates. तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं, and it will directly take you to the Power Query Editor mode, right? सो पावर क्वेरी एडिटर मोड में हमने कुछ डेटा पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जिसमें से जो कैलेंडर का हमारा टेबल है ना, इट इज़ extracted right now, and it is one of the most important features that we are going to discuss here. So I'll request you kindly pay attention here, and if you have any doubts regarding this features or regarding any queries or any data transformations features, you can leave your comment into the comment box, guys. तो चलो देखते हैं और डिस्कस करते हैं, राइट? अंडर द ट्रांसफॉर्म टैब, सो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे डेटा सेट में अगर आप किसी भी टेबल में, किसी भी क्वेरीज में अगर डेट का कॉलम देखते हो, सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू क्रिएट योर ओन कैलेंडर टेबल. आप अपना एक कैलेंडर टेबल क्रिएट कर लो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. मतलब किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको कैलेंडर क्रिएट करना है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट डेट टिल द एंड डेट. एंड क्योंकि ये जो आप खुद से कैलेंडर क्रिएट करते हो ना, ये आपको मेनली हेल्प करता है, डेटा मॉडलिंग में भी हेल्प करता है और राइट रिजल्ट्स रिटर्न करने में भी बहुत हेल्प करता है, राइट. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज दैट. बट आपके पास ये एक सिंगल डेट का कॉलम है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्यू इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस, लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने कि आप इस डेट कॉलम से ईयर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, इस डेट कॉलम से आप मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, मंथ नंबर एंड मंथ नेम भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट. आप डे नंबर ऑफ डेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आप क्वार्टर नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आप एंड ऑफ द मंथ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो. देर आर सो मेनी फीचर्स अवेलेबल अंडर द डेट एंड टाइम फीचर्स, राइट. सो व्हेन यू विल गो अंडर दिस ऐड कॉलम ऑप्शंस, you will see there is a date features, right, from the date and times tab. So when you will go and click on the date, you will see a number of options and features are available over here, right. If you go in the year tab, you will see there are three options called year, start of the year, end of the year. इससे आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ये बाय द गिवन फ्रॉम द गिवन डेट कॉलम्स. आपको मान लो जैसे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, आप सिंपली ईयर पे क्लिक करो, आपका ईयर जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 साल का डेटा है, राइट, 15, 16, 17 का डेटा है. सो हमारे पास 15, 16, 17 का ईयर एक्सट्रैक्ट हो चुका है. अगर आई एम गोइंग टू द डेट एंड दिस डेट फीचर ऑप्शंस, अगर आपको चाहिए स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, सो ये भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. चलो मंथ पे आते हैं. अगर आपको चाहिए स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ क्या करते हैं, नो मैटर वेदर इट्स 25th ऑफ जनवरी और इट्स 29th ऑफ जनवरी और इट्स 31st ऑफ जनवरी और इट्स 1st ऑफ जनवरी. इफ़ यू चूज द स्टार्ट ऑफ द मंथ फॉर ऑल द डेट फ्रॉम 1st जनवरी टिल 31st जनवरी, इट विल रिटर्न you 1st of January. That is the start of the month. So when I will choose this option, start of the month, you will see 1st of January, 1st of January. For all the date till 31st of January, you can see 1st January, right? So you can extract a start of the month as well. When you will go to the month again, and if you want the start of the month, we have recently extracted. Let's say for example, we want to extract the days in a month or the name of the month. I want the name of the month right now. तो अभी हम नेम ऑफ द मंथ पे क्लिक करेंगे, एंड यू विल सी नाउ यू हैव दिस जनवरी, राइट. सो मंथ ऑफ द नेम वी कैन ऑल्सो extract from the given features. So now you can imagine how much important and how why it is so important to learn these features, right? Likewise, you can also extract, if you go into the quarter options, you have the quarter of the year, start of the quarter, end of the quarter. लेट्स से अभी हम लोग जनवरी में, लाइक 1st जनवरी, सो 1st जनवरी में ये जो 1st जनवरी है हमारे फर्स्ट क्वार्टर में फॉल करेगा, क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है वो 3 महीने का होता है. लाइक फ्रॉम जनवरी to March, this is the first quarter. From April to June, this is the second quarter. From July to September, it's the third quarter. And from October to December, it's a fourth quarter, right? So I'm just going to choose this quarter of the year. You will see the first quarter, right?
And when you will go into the February or the March month or the April month, you will see, and the April month, it is showing under the second quarter, because from April till June, it will show you the second quarter, right? So the quarter you can also extract from the given date columns. Again, I'm going to the date options, right? So from quarter, start of the quarter, you can extract, end of the quarter, you can extract. Now, week. I want to know the number of weeks of the month. Like let's say, for example, in a month, we have 4 weeks. Sometimes we have 5 weeks. So which number of weeks is currently going on? We want to find it out, right? So I'm just going to like start of the week of the month, right? So I'm just going to choose week of the month. So this is the first week. Looks first 3 days will fall under the first week of the month, and the rest second week of the month, right? Till here. So the number of week you can also extract from the given date columns. It will also help you analyze and find the trends and the patterns by the month, by the quarterly. You can analyze your data. By yearly, you can analyze your data, right? By the start of the month, you can analyze your data. So we have a lot of options. Like we also have the name of the day, right? So if you will click on the name of the day, you will see by the end of this table, we have Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And let's say, for example, if you want to find the sales, ये एक सेल्स का डेटा है. आपको पता करना है कि हमारे जो सेल्स हुए हैं वो सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे कितने हुए हैं. सो बाय द नेम सैटरडे संडे पे आप सेल्स एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास डे का नेम हो लाइक मंडे, Tuesday, Wednesday, Thursday. So on weekend, we can easily find the trend and the sales seasonality, right? So, and now you can finally imagine how much important this date column is and this date feature is, right? That's all for today, guys. And let's catch up in the next videos. Thanks for watching and giving me a lot of support.